So you are in BCom only, right? Sorry, sir. You have registered for the BCom course, right? No, sir. No. Then, सर मेरे बीएजी कोर्स है इसमें मेरा sorry, लिंक करा दो इसका बैगला 136 का sorry. मेरा बैग का कोर्स है बीएजी बैचलर ऑफ आर्ट्स Okay, उसमें मेरे okay, पास लिंक आया था सर okay, 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 okay. No issues. Okay, so Deepthi and Kisra both are from BCom, right? Yes, sir. Yes, sir. BCom OF online mode, sir. Okay, okay. So Deepthi and Kisra, do you have any doubt from the previous class? No, sir. But I have some general doubts regarding the online program, sir. Okay, so ask your question. Uh, this online program, there's no question papers available in the website, sir. All the question papers are related to BCom G, and the question paper I got in my first year exams were totally different from it. The pattern were itself different. Is there any place I could get the question paper? Okay, Deepthi, whatever your issue is, you can type in your message box. I will forward it to the concerned authorities and they will clear your doubt, right? Sure, sir. Thank you, sir. Okay, whatever is your issue, just send me a message in the class only, right? Yes, sir. I'll do. Okay, so shall we start for today's class? Yes, sir. Okay. So, can you everyone see the screen? Yes, sir. Okay, so as you know, the name of our course is English at the Workplace, and the course has 4 units or 4 chapters, I should say. And today we will cover the second one. In the earlier chapter or in the earlier unit, we studied about how we can search for a job and how we can figure out a vacancy according to our need, according to our qualification, according to our requirement. How to search for that, how to respond to that, and how to take a follow up, and how to be at a stage when we can be interviewed, right? So in that series only, our present class is about the second topic, that is preparing for the job interviews. So this unit, this chapter or this class will cover four main points. First, using body language effectively means role of body language before appearing in the interview, during appearing the interview, and of course, leaving the room after the interview. Then second one is portfolio making. Third one is writing your CV, and the last one is preparing to face an interview. Apart from learning all these 4 points, we will also cover some exercise from grammar because you all know our self study material contains four things: reading, writing, listening, and speaking. When we talk about speaking, speaking is at the practical part when you actually appear for the interview. So during our class, we cover three things: reading, and some writing assignments, and of course you listen to me what I speak. So let's start with the first one, that is using body language effectively. I hope every one of you who have joined for the class might know about non-verbal communication, because in our earlier classes we have discussed at length that what is verbal communication, what is non-verbal communication. And we all know our verbal communication is assisted by non-verbal only, because whatever we speak is affected by particular culture,
particular pronunciation patterns, and according to the audience. When we speak something, we try to learn, we try to figure out who is our audience. So, according to audience, we use our vocab. According to audience only, we use our body language. And when it comes to interview, body language becomes rather more serious, equally as our words are. So, whatever we are speaking, the way we are speaking, and what is our facial expressions, our bodily posture while appearing in the interview leaves a lot to be discussed from the interviewer's point of view. So, the first point here is expand your vocab regarding non verbal communication. It means uh, nobody will ask us speak something in non-verbal, but our vocab should be associated with non-verbal. Our facial expression, the way we move our hands, our eye contact, the lip movement, and the way we sit, all these 4 points show that our vocab is assisted with non-verbal communication. When we are speaking something and we are able to make some expressions that clarify the concept itself, it means our vocab is associated with non-verbal communication. And not only to communicate, but we have to understand non-verbal communication thoroughly. Why? Because it's not only about sitting straight, it's not only about maintaining eye contact, it's not only speak something very correctly, pronouncing something appropriately. No, it's all about how people will feel what we want, what we want to make them feel. हम जो चाहते हैं वो सामने वाला फील करे, then our communication is effective. Otherwise, what will happen? It will happen that we will feel I couldn't say that, and I couldn't say that in that way. So then it will be a problem, right? Then recognize the importance of body language and improve your own body language. We cannot change our gait. Gait means the way we walk. हम चलते कैसे? We cannot improve how we uh, sit in a particular position because it is not possible to change our body position incessantly, regularly. No. But to find out the place when we can change our body posture, sitting style, then it means we understand the language of body language, because the same time we are thinking, at the same time we are responding, and at the same time we are listening to the interviewers while making an eye contact with everyone. So so it is not necessary that we always answer with verbal communication. Sometime maintaining an eye contact, answering a question with everyone make a sense that we are answering to everyone, not to a single person. Sometime, if four people are speaking and we are the only one, in that case, we have to choose whom we want to answer while making an eye contact. But if one person asks question at one time and others are listening to us, so we can figure out who is listening to us very carefully and who is finding something in papers, the resume, the documents we have already submitted. So two or three of them might be searching something from them. They are trying to prepare a question from that. So at the same time when they are reading that and a person is asking question, we don't bother what the person is finding out, because when we see our resume and someone is looking out something from that, we may feel bothered. Actually they want to do that, they to do that,
जस्ट फॉर दैट पर्पज ओनली, कि सामने वाला ये थोड़ा कंफ्यूज हो जाए कि हाँ हम इसके पेपर्स में कुछ ढूंढ रहे हैं। अदरवाइज दैट पेपर, दैट रिज्यूमे, दैट डॉक्यूमेंट्स आर अवेलेबल विद देम एटलीस्ट 2 or 3 months before the interview, because they already have invited our resume and documents as well. So they have done proper homework, there is no issue. Or they will do the homework after the interview. But if they are looking into our papers during our interview, it means that they want to check our patience level, they want to check our confidence level, and they want to check our resistance level, means how we feel when someone is preparing to ask a question. And if we are able to do that, then we can face an interview panel confidently, because it is not necessary that we know every answer, but the way we try to answer the question, it makes a sense, it leaves a difference, because sometimes even the interviewer don't know the answer of the question, right? Then prepare and deliver a speech impressively. Here, speech doesn't mean a proper speech. During an interview, nobody will ask us speak a speech on that or deliver a speech on that. It can be that they are asking something to explain. They want us to explain something. The way we start, the way we define the topic, the way we proceed with the topic, that is speech, because they won't say conclude after 2 minutes, 3 minutes, 5 minutes. Uh, it may require that we have to speak, but not for more than 5 minutes, because 5 minutes are a very precious part of time, and nobody want to invest a lot of time in a particular candidate, especially when only a candidate is speaking. Actually, the tendency among interviewers is what, एक उनके अंदर टेंडेंसी होती है, they want to ask question until we don't know the answer. And if we start answering the question and they recognize that we are answering well, they will stop us and they will ask another question, right? So sometimes it is not necessary to answer appropriately, but what is needed? It is needed that we must speak something, and speak what that makes a sense, that can be relevant to the question, if not fully, then most of it. So this is what how we can use our body language effectively during the interview. Going ahead, our next is body. How do you wear? How you prepare yourself during the interview? Whatever we wear, of course, it doesn't matter. Why? Because if there are four interviewers, five interviewers, and one of them is asking a question, another of them is finding something in our papers, what the two are doing, the rest two are doing what? They are looking at us, they are looking at us for to check the confidence. They might see how we are using our hands and legs, how we are sitting in the chair, and whatever we have chosen to dress. And we all know dress does matter. Why? Because it make us feeling that we are going for a special purpose, and that's why the interviewers feel if that person is not serious, if that person is not formal during the interview, that person might not be very serious during the job itself, because it is not necessary that there is a particular uniform in a company, but there can be a dress code. So if we want to impress the interviewers, we can recognize, we can find out if there is any dress code in that company. In last class, I told you that before going for the interview, we must discover, we must find out, we must search some facts about the company. And when we go for that, we can do two to three things. We can search for the website, we can talk with a person who is already working over there, right? Third, we can have a visit personally, just for the sake of
a casual approach. Just I wanted to visit your company, sir. When we visit the company and they allow us to uh, get insight within 2 to 3 minutes or maximum 5 minutes, we can recognize if there is any dress code in the company, right? And if it is, when we will appear for the interview, when they call us, we can be in the same dress, because they will not say why you have copied our dress. Rather, it shows that you really want to merge with them. You have done some homework, means you invested some time for preparing the interview, especially for that company. Because wearing a white shirt or wearing a navy blue shirt and wearing a uh, dark blue trouser or black trouser, it doesn't mean that we are applying for a particular company. And if there is not any dress code, then there is no issue. But we should be formal at that time. Whether you are assertive or quiet type of person and how enthusiastic you are, our body language tells to the interviewers about us that whether we are positive, assertive, or we speak a lot, or we don't want to speak more than requirement, because during interview we are supposed to speak as much as we can, but according to the question. If we want to show that I am a peaceful person, I am a person who don't want to speak a lot, then interview is not a good platform for us. Hopefully we are not going to get the job, because interview is a place when we are supposed to speak, and workplace is the place when we are supposed to work, not speak a lot. So both are different things. When we want to show and when we want to work. When we want to work, it is not necessary to speak, but when we want to show our capabilities, then we have to speak. We can't say, "Sir, just give me employment, just hire me, and you will see what I can do." No, we have to propose that. We have to say that. We have to give a plan. Whether you are speaking the truth or not, they will check, because they will go through our resume, they will go through other papers that we have submitted, they will ask question from that, and they will try to find out the difference when what we are not speaking according to what we have mentioned already. And this is a big difference. If they found that something false, something uh, untruthful has been furnished, the whole impression will be vanished, because everybody want a loyal employee, and if not loyal but a truthful employee. And truthful employee later on becomes loyal employee, and loyalty always pays. Body language increases chances of getting job. Some people say it's not only about body language, but some people say body language is more than 80%. I don't know the exact figure, because it may vary from person to person. I mean, interviewer to interviewer. But I must say, body language enhances the chance of getting job. Why? Because if we want to appear in the interview just for the sake of experience, we will we will feel less stressed. It happens. आपने देखा होगा. एंड इफ नॉट देन यू विल सी, अगर हम कोई जॉब लेने जा रहे कोई इंटरव्यू देने जा रहे हैं, एंड वी आर नॉट वेरी डिजायरस, वी आर नॉट हाईली विलिंग टू गेट द जॉब, वी आर देयर टू जस्ट गेट एन ऑफर लेटर और just want to check our knowledge, then we feel less tense. There should be little tension. थोड़ी सी टेंशन इंटरव्यू में होनी चाहिए. बट अगर मैं वो जॉब चाहिए नहीं है एंड वी आर देयर, इट इज नियर टू माय कंपनी, एंड लेट्स ट्राई फॉर अ गुड ऑफर, so that we can show that offer letter to our present organization, and they might increase our salary. So they will recognize, they will really recognize
whether a person, because जब हमें इस चीज़ का पता है एज अ इंटरव्यूवी कि हम क्या शो कर रहे हैं, इंटरव्यूअर्स आर रादर more experienced than us. They have experience of working as an employee. They have experience of being an interviewer. So they are better person than us as far as experience and knowledge is concerned, especially for that job we are applying for. So our body language should be equally proportionate to the need of the job, the nature of the job. Otherwise, they will feel this person don't want that job, because at present there are a lot of employees, they appear in the interviews because at present interviews are held online also. So gone the days when we have to visit the company, we have to take a leave, we have to spend 8 to 10 hours waiting for the interview, then traveling time and all that. Now, according to our time, according to when we are free, when we are working somewhere, from that only we can spare 30 minutes, 40 minutes, and there is no interview of more than 1 hour. Doesn't matter what the level of post is, and if it is, then they might call us at the office of the company only. During online interview, I have seen that, it is my personal experience as well, and I discuss it with a lot of my colleagues, seniors and friends, and of course students. Online interview is maximum of 30 minutes. However, it may be up to 1 hour, but still, there are many things which cannot be judged during online interview. That's why online interview is just for the sake of screening type of interview, so that they can find out a person that yes, we can call that person at our company personally, because the interview board also is very busy, and they don't have always 5 to 6 hours every week, every month, right? So online interview is a better platform, and during online interview body language matters a lot. Why? Because we feel more comfortable during online interview rather than offline interview, because during online interview they can see our face, they can see our hands, but they can't see how we are sitting, where we are sitting. And if they ask us to do like this, then if you are unable to understand something and you don't want to answer, you can say there is some network issue. It can be from both sides. There can be some other disturbances also, right? But when it comes to a physical interview, when we have to appear in person, then it is only body language that will speak before you speak, right? So we must try to adopt a posture that shows interest but relaxed, right? So our body language should show that we are interested in job, but we must be relaxed, not very tensed. It is better to let your hands lie on your lap or place them on the armrest of your chair. Yes, where we should put our hands. It can be a very pertinent question that every person who want to appear in the interview want to ask. So the best way is you can let your hands on your lap, or you can cross your fingers simply and sit very comfortably. And if the chair has arms, you can put your hands on the arms only. It shows that you are not busy somewhere, because some people start doing some expressions or some activities with their hands. So if our hands are free and the interviewers can see our hands, it means we are 100% focused, we are having full concentration to what the interviewers are asking.
Hand movements indicates that you are feel at ease. Definitely, our hand movements make us feeling, make the interviewers feeling that we are feeling ease, we are feeling comfortable, we are not tense, we are not scared, we are not sweating, right? So don't shuffle your feet or kicking against the table. Some people start doing that. They think interviewers are not watching to our feet. So in order to uh, hide our hesitation or less confidence, we start kicking our feet against the table, or we can draw a circle, a line with the help of our shoes. So it is not required at all. Of course, it may happen when someone is appearing for the first time, or he or she may feel nervous, but it should be shown through our verbal communication, not non-verbal communication. Because if we leave the job, then we have nothing to lose because it was our first interview, right? Now, let's go to the grammar section. And the grammar section is, of course, related to interviewing skills only. So, are you able to see the screen? Screen देख पा रहे हो आप? Yes, sir. Uh, Yes, sir. okay. So, read the action and see the word stands for that action. Take 2 minutes and read. पढ़ो एक बार आप. Yes. Any doubt in any word? Okay, so we can see some other students also. Meanwhile, Piyush Gupta is here, Navya Verma, Monica, Sanskriti Saurabh. Good. So, students, when you will look at the screen, you will find the words that particularly based on the non-verbal or especially the aspects of body language. They are the primary symbol. They are the primary cues that gives a picture that presents our image before the interviewer. When we enter in the room and our walk is brisk walk and erect walk, means we are not looking behind, and we are not focusing how we are walking. We just go in a normal way. It shows confidence. Standing with hands on hips, this shows aggression that we are not feeling well. Of course, when someone is speaking and we are unable to understand, five people are sitting there, two are asking questions, and you are not getting what are saying, and we are not able to answer two questions, three questions, and continuously more questions. Then we will feel when it will end, and we don't know when a question can come that we can answer. Right? So these are the words that can enhance our vocab as well. And when we were reading this,
Sir, Yes. sorry for disturbing, but your voice is not coming. Now it is not coming. No, sir, it's very little coming. Sorry. Sir, very slowly and little coming. Please say Okay. loud. Okay. Okay. Just a minute. Now it is coming. It's perfect, sir. Okay. So when we were covering this PPT, this slide, I should say, there was a point that expand your vocab regarding the non-verbal communication. Expand your vocab regarding the non-verbal, and this is the vocab, right? So if you will read all these words, right, you will find that all these words are related with the non-verbal vocab only. Means while doing all these actions that are before you on the screen, we have nothing to speak, but everybody will be shown or seen through non-verbal communication only, body language only. Am I right? Yes, Yes, sir. sir. Sorry. What is the meaning of third word? Boredom. Yes, sir. Boredom, when we feel bored, when we are not willing to listen to someone a lot, when we don't want to bear someone, Okay, sir. Okay. right? So however, it is a strange thing that we feel bored during the interview. During the interview we can feel scared, we can feel relaxed, we can feel rather tense, but feeling bored during the interview, however, it is rather rare, because nobody is so free that someone will let us sitting for then 20 minutes 30 minutes when we feel bored. No, but sometime it may happen, sometime, because it happens. Actually, what happens, I want to tell you, as far as my experience is concerned, when we will appear for the multinational companies interview, they do what? Before taking the interviews of the candidates, they gave a presentation. Once I attended an interview by the Infosys in Pune only. So it was a thing of 2010 when I did my masters in management. Then it was my first interview. I went there along with my friends or the people who were sitting over there. I saw that there was a person, I can say, or there can be a representative of that company. They shown us a presentation of nearly 40 minutes, and they were telling a lot about their company, and we were just fresh pass out candidates, just who have passed their masters. So we were sitting in a AC hall, and they were showing the presentation, and we were thinking that we are not selected, we have not even appeared in the written test, we have not been interviewed, and why these person are spending so much time while or during telling about their company. So they spoke of more than 40 minutes, and they asked us ask any questions, and we felt that most of us were feeling boredom. So most students, please mute yourself. Stud, हैंग कर रहे students कैमरे तक दो उसके साथ. students, please mute yourself, please. Okay. So we were feeling why they are making us feeling bored. But after finishing that presentation, and when they conducted the written test, and I was lucky enough to clear the test, and when we appeared before the interview, they asked a lot of questions regarding that presentation only. Then we felt we didn't search something about the company, the Infosys, on internet, because at that time we were not having our laptop. But they gave a very good presentation, and we didn't bother, because we were thinking we are not part of that company.
But they said that when we from our side want to tell you something about our company, and you are not focusing, it means you are not very much interested to join our company. Because if you have searched something about our company, and after listening to our presentation, you might be very sure why you want to join a company. You might have some knowledge, some facts about our company, other plants of our company, working culture of our company, and other offices of our company, right? So they are the questions about what are other corporate office of our company, what are the major part that our company supplies, what kind of software our company made. And I know at that time in 2010 only, Infosys provided a software to Indian Railway, and they mentioned about that. But when they asked the question about that, we couldn't tell, right? So when we are sitting in the interview, and when we are a pre-interview presentation, we must focus on everything, because they will ask on three things. An interview can be based on three things mainly. First, the information they have about us, they want to cross verify that. Second, they want to check why we are interested in that company or what we know about that company. Second thing. Third thing, how we can put our candidature in a strong way. Means how we can show that, yes, sir, I am above others. Yes, sir, how I am different from others, and how I am ultimately fit for this job. Right? There is a saying that when all the birds are during the rain, when the old birds try to find out the shelter, they go to their nest, and others try to find out a place where they can hide themselves, they can save themselves from rain. It is the eagle that that goes above the clouds, right? This is the way it saves itself from the rains, right? So I think this is the pattern we must follow. Let us move ahead, and let's do some work. Try to use these words into sentences. Yes, who can try? Because this is the first exercise, and very very easy exercise. Anybody who want to use that word into sentence? Anyone? Are you listening to me, everyone? Yes, sir. So use the word convey into sentence. Sir, they conveyed the message. They conveyed the message. Okay, how the word convey can be used during an interview? Can you tell me any sentence when we can use the word convey during our interview? Any guess? सर कन्वे मीन दैट कि अपनी आवाज किसी तक पहुंचाना. हाँ, राइट। बट आई एम आस्किंग, कोई एक सेंटेंस बता सकते हो जिसमें हम कन्वे वर्ड ड्यूरिंग इंटरव्यू यूज कर सकते हैं? To convey our professional dreams, ambitions. डियर, व्हेन वी स्पीक समथिंग, जब भी हम कुछ बोलते हैं, हम क्या कहेंगे? सर, आई वांट टू टेल दैट, राइट? आई वांट टू शेयर विद यू दैट, right? Yes. If we say I want to convey that, convey doesn't mean clearly to say something. Convey means to pass a message, right?
कन्वे का मतलब होता है, Yes, sir. हाँ. So during interview, convey can be used from the interviewer's side. They can say it has been conveyed that you must carry this document with you. It was conveyed that you must have a presentation ready with you. Right? So convey is the word जो हमें यूज नहीं करना है, इंटरव्यूअर्स यूज कर सकते. राइट. Okay, sir. What about transmit? Anybody knows any? So I think हाँ. Yes, yes, speak. mm, uh, to transfer something, Yes. knowledge. Yes, yes, to transfer something, and transfer something that is technical in nature. Convey Mm, and convey and transmit both are same. The only difference is that convey is used for common things, but transmit is used for technical things. That's why there is an instrument named as transmitter. Of course, transmitter is used to convey something, right? The third one is assess. Yes, can you anybody tell me the use of assess during the interview? Because meaning of these words are not very difficult. So why we are here to learn that, means how we can use an effective word during the interview. So as you told that interview always used to ask about related to our self. Yes. So assess means to check something, right? Yes, sir. Hmm. So assess word can be used if someone asks us, uh, how much salary do you want, what are your expectations, especially financial expectations. Then we can say, sir, it's up to you how you assess my qualification and experience, how you assess my credentials, how do you assess my candidature. So assess is a word that we can use, but it should be done by the interviewers, because we cannot assess them, right? so Yes, sir. so Yes, we sir. can see how the words are very important, especially during the interview, because every word during the interview counts. Here are some other words, have a look. So we can tell about something us. Yes, speak again, sorry. So we can tell about our abilities and I'm asking the words that you can see: self assured, prone, indicate, inadvertently, and mutual. These words, and earlier the three words that we have seen, and there can be some similar words also. These are the words that help us to negotiate, to tell something about ourselves, and to ask something, right? Self assured word is the word that shows our verbal and non verbal communication as well. We cannot say, sir, I am self assured, but the way we speak, the way we sit, the way we present ourselves can give an impression that we are self assured, right? And the same way is prone or indicate. And if you talk about mutual, mutual means the word, when the word mutual comes, especially during the interview, it is about negotiation, it is about salary,
I want to tell you everyone, it may happen that you know it already, but let me revise. There are three main stages of interview: according to the need, according to the level, according to the company, according to the uh, uh, situation. There can be multiple levels, but in general, as a communication skills teacher, as a personality development teacher, I want to tell you that apart from teaching you, I teach the BTech students. I teach an engineering institute, and I used to tell them that there are three stages of interview. First, when they want to check our facts, when they want to check our subjective knowledge, right? This is the first stage. We can call it the screening stage, right? They check our educational qualifications, the marks we got, if you do have any reappears, or what kind of students we have been so far. This is the first stage. It also includes finding the basic qualities, basic qualifications in a candidate a company needs, or an employer needs. This is the first stage, the screening stage. They may ask some technical question, subjective question, I should say, right? Because as a commerce students, as an art students, you might ask, sir, what are technical questions? So in your case, it can be subject related questions, right? Then the second stage is about, they may ask according to role, they may ask something according to the responsibility they are supposed to offer us, right? They may ask what kind of experience we have. They may ask similar other questions: why we want to join that company, why we left the previous company, or why we want to leave the previous company. They may ask some questions when we feel we have not prepared for that. For example, if we are having some responsibility in a company, and we are going to another company, and the HR will ask the COE, or CEO may ask, why you want to leave the company, because you are a resource for your present company. Then it is really difficult. If you say, sir, growth is not so much, I want the financial growth. Someone may ask, if you are working at a place for 5 years and you are not provided with the proper financial growth, then why you spent 5 years? If you say, sir, I was waiting, so they may say, okay, wait for another 1 or 2 years, right? If but sometime we say, sir, the company made a promise, but they didn't fulfill the promise, right? Then it is also not a very good answer. Then we can say, sir, of course they offered me a good increment, but I feel that the increment I want, the growth I want, it is not possible in my present company according to their policy, right? So these are not diplomatic answers, but these are a specially framed answer. Of course they are cleverer than us, they are smarter than us. When they can search, when we can search about the company, they can also search about our company. And it may happen the HR manager who is going to interview us, he or she might have worked in the same company where we have worked, right? So because in corporate world, if there are 20 companies, 25 companies, or 100 companies where a candidate want to join, because common companies can be in thousands of numbers, but there are some companies that every employee want to join, and these companies are in every field. If I talk about the software companies in India, you might have aware regarding this or not. If we leave Infosys and Wipro, TCS, Tata Consultancy Services, it hires a lot of people every year, and from different fields. They hire arts graduate, they hire commerce graduate, they hire engineering and science graduates, right? So TCS is a good company. It's a multinational company,
and everybody will want to join that company because its experience does matter. There's a company, Diolite. So of course these are from the companies that hire all kind of graduates. इसलिए मैंने इनका एग्जांपल दिया है. I know nearly 100 companies that hire our students, but they hire technical graduates, they hire BTech students, MBA students. But जो मैंने आपको बताई है ये company they hire any graduate. It can be arts, it can be commerce, or it can be science, or it can be other fields also, right? So when we talk about those companies, it is needed to do homework, and it is also needed to do some work how we can answer the possible questions. So for that we must search on internet. हमें सर्च करना चाहिए frequently asked questions, sample questions during the interview, because we all know the first question during the interview may be or shall be introduce yourself, right? And during that introduction they start asking the first question from our introduction only, and we prepared our introduction very well, but they just want to check our communication skills, and after three sentences or four sentences they say, okay, yes Kisra, uh, tell me about this. So the flow we wanted to make, the preparation we have done, it will be affected, and we won't be ready to face the next question, right? So these kind of words are from that section only. It indicates that you have not worked uh, very regularly with the companies. So indicate is also a word used by the interviewers, right? Now, similar kind of exercise. Here are some gestures, right? And here the words stand for that gesture. So let us match them. Can we take a try? Try हम कर सकते हैं. Yes, sir. So try to do that. यस, समझ आया बेटा? कोई बता सकता है? एनीबडी? Again, this is body language vocab, non-verbal vocab. When we don't speak something, but our body language speaks.
Yes, Monica, Pinky, Navya Verma, Sanskriti, Kisra, anybody? Sir, noting the head shows. Fourth one. Nodding the head shows. Nodding means जब हम थोड़ा सिर हिलाते हैं, Yes, sir. Yes, राइट? sir. हाँ, और हम ये शो, Uh, और हम शो भी करते हैं कि हम सिर हिला रहे हैं, राइट? सो लेट्स गो फॉर द फर्स्ट वन. When left hand over right with palms down, right? Left hand over right with palms down, right? It shows interest. इस पोजीशन में हम ये दिखाते हैं कि वी आर इंटरेस्टेड, राइट? एंड इफ यू टॉक अबाउट द सेकंड वन, राइट हैंड ओवर लेफ्ट शोज व्हाट? राइट हैंड ओवर लेफ्ट. जब हमारा राइट हैंड लेफ्ट में होता है तो ये शो करता है डिसएग्रीमेंट, right? Disagreement means we are not able to accept that, we are not saying something but we want to say that, right? This shows disagreement. Third one, cross legs watching without flicking eyes. जब हमने क्रॉस लेग करके हम बैठे हुए हैं, हम देख रहे हैं बिना अपनी आंखें फ्लिक किए, हम आंखें नहीं इधर उधर कर रहे हैं, और वी sir, आर, decision making. नो, दिस शोज डिसइंटरेस्ट. डिसइंटरेस्ट, Okay. Yes, sir. राइट? डिसीजन मेकिंग होगा नैरोइंग ऑफ द आईज एंड स्ट्रोकिंग द चिन शोज. नैरोइंग द आईज, राइट? हम चारों तरफ देख रहे हैं कि कौन क्या करने वाला है, कौन क्या सोचने वाला है, व्हेन वी विल गिव अ डिसीजन, राइट? एंड व्हेन वी स्ट्रोक आवर चिन, जब हम बार बार थोड़ी को ऐसे करते हैं तो हम, वी आर गोइंग टू मेक ए डिसीजन, हम बस कुछ भी बोलने वाले हैं, एंड दैट विल बी आवर डिसीजन, राइट? एंड व्हेन वी नोड आवर हेड शोज, जब अपना सिर हिलाते हैं और ये दिखाते हैं कि हम सिर हिला रहे हैं, तब इसका मतलब ये होता है कि हम किसी को एनकरेज कर रहे हैं कि आप बोलिए, मीन्स वी शो एनकरेजमेंट. Yes, sir. Sir, but first और second वाला समझ नहीं आया. ओके, देखो हमारा जो लेफ्ट हैंड है, ठीक है, राइट हैंड के ऊपर है, लेफ्ट हैंड राइट हैंड के ऊपर है, और हमारी हथेली जो हमारी पाम्स है वो नीचे है, मीन्स वो नीचे वाली साइड है, ठीक है? ये क्या शो करता है? ये इंटरेस्ट शो करता है. जो हमारा लेफ्ट हैंड है ना, वो राइट हैंड के ऊपर होता है, तो इट शोज ए पॉजिटिवनेस कि हम इंटरेस्टेड हैं. ये बॉडी लैंग्वेज की वोकैब होती है. लेकिन जब राइट लेफ्ट के ऊपर हो तो वो डिसइंटरेस्ट होता है, वो डिसएग्रीमेंट होता है, राइट? अब Sir, जैसे sir, जैसे हम सैल्यूट करते हैं, वी सैल्यूट, वी ऑल नो, इफ समवन इज नॉट लेफ्टी, अगर कोई लेफ्टी भी है तो भी सैल्यूट राइट हैंड से ही किया जाता है, राइट? इट इज क्लियर, ये बिल्कुल क्लियर है, इसमें कोई वो नहीं होता. सो कुछ चीज़ें ऐसी हैं, देयर आर सम थिंग्स इन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, वो सबके लिए कॉमन है, दे आर कॉमन टू एवरीवन. हम वी कांट से कि मेरा मीनिंग तो ये था सर. सी, जब हम कोई गाना सुन रहे हैं अपना सिर हिला रहे हैं, और जब हम मना कर रहे हैं तो अपना सिर हिला रहे हैं, दे हैव द सेम एक्सप्रेशन. व्हेन वी आर लिसनिंग टू ए सॉन्ग, वी क्लोज अवर आइज और नॉट, हम सीधे सिर नहीं हिलाते हैं, राइट? हम ऐसे सिर हिलाते हैं जैसे मना कर रहे हो. This is the position when we show our enjoyment, right? बट जब हम किसी को मना करते हैं तो भी हम ऐसे ही सिर हिलाते हैं. बट व्हाट इज द डिफरेंस? डिफरेंस क्या है? जब हम गाना सुन रहे हैं तो हम अपना सिर धीरे धीरे हिला रहे होते हैं, लेकिन जब हम किसी को मना करते हैं तो कंटिन्यूसली एक स्पीड में हम सिर हिला रहे होते हैं, right? So this is the difference, and it is a very visible difference to everyone. In the same way, जब हमारा लेफ्ट हैंड राइट हैंड के ऊपर हो और उसकी हथेली नीचे हो, तो ये दिखाता है कि वी आर शोइंग इंटरेस्ट. अगर हमें इसके बारे में नहीं पता है तो हमें ये सीखना है, राइट? अगर हम, okay, sir. हाँ Yes. हाँ, अगर हमें नहीं पता है
मीन्स वी हैव नॉट नेवर सीन दैट, हमने ऐसा कभी देखा ही नहीं, ऐसा कभी किया ही नहीं है। तो हमें ये देखना है कि ड्यूरिंग द इंटरव्यू व्हेन समवन इज सेइंग समथिंग एंड वी वांट टू शो दैट वी आर गेटिंग हिम और हर, हम उससे एग्री कर रहे हैं, तो हम किसी भी पोजीशन में बैठे हो, हम अपनी जो पोस्चर है वो ऐसा कर सकते हैं कि हमारा लेफ्ट हैंड राइट हैंड के ऊपर चला जाए और हम अपनी हथेलियां नीचे कर ले, तो सामने वाला समझ जाएगा कि यस वी आर शोइंग इंटरेस्ट, राइट। बट हमें पता है Yes, कि, sir. बट वी नो दैट, लेकिन हमें पता है कि राइट हैंड अगर लेफ्ट पे है तो भले ही हम इंटरेस्ट शो करना चाह रहे हैं बट मैसेज तो नहीं जा रहा है ना। नॉन वर्बल की प्रॉब्लम क्या है? नॉन वर्बल बहुत अच्छी कम्युनिकेशन है, प्रॉब्लम क्या है? इट इज नॉट कॉमन फॉर ऑल। लेट मी गिव एन एग्जांपल, वी ऑल बिलोंग टू डिफरेंट कल्चर्स, हम सब अलग अलग कल्चर से बिलोंग करते हैं। कल्चर, मैं आई डोंट बिलीव इन रिलीजन, सो आई यूज द वर्ड कल्चर। Culture is a richer or bigger word than religion, because religion is just a part of culture, right? Because the cultural symbols have been developed in religion. All Hindu pray with folding their hands, right? All Muslim pray with opening their hands, right? And Sikh people bow their head before the Guru Granth Sahib, and Christians make a cross when they want to pray before God, right? So all these four symbols, all these four expressions are common to everyone. दुनिया में चाहे कोई किसी भी धर्म का है, किसी भी कल्चर का है, he or she knows about these rituals of other religion. For example, being a Hindu, if I go to a mosque, so I will see the people कि वो लोग कैसे प्रे कर रहे हैं, I will do the pray in the same way. Being a Muslim, if I go to any other religious place and I will see people are praying in that way, I will do what? I will pray in that way only. So why? Because it's a common expression. And if I don't do that, it means I don't want to pray. Simple. But if I Yes, pray, sir. but if I pray in a particular cultural way at any other cultural place, अगर मैं गुरुद्वारे में जाता हूँ और मैं गुरुद्वारे में एक दिया लेके जाता हूँ जो कि हिंदू करते हैं, बीइंग ए पंडित हम भी ऐसा करते हैं, मैं भी ऐसा करता हूँ कि मैं अपने घर का जो मंदिर है वहाँ दिया जलाता हूँ। बट इन गुरु घर, जिसको हम गुरुद्वारा बोलते हैं, वहाँ पे दिए का कॉन्सेप्ट नहीं होता है। देर इज गुरु ग्रंथ साहिब, वहाँ पे एक होली बुक होती है, पीपल बो बिफोर इट, लोग उनके सामने सिर झुकाते हैं, मत्था टेकते हैं, इसको बोलते हैं। सो इफ आई वांट टू फॉलो दैट, अगर मुझे दिया जलाना है तो मुझे उस जगह ही जाना होगा जहाँ दिया जला के पूजा की जाती है। एक और एग्जांपल है, हम धागा बांधते हैं, जो एक धागा बांधने का कल्चर है वो हिंदू और मुस्लिम दोनों में पाया जाता है, बट क्रिश्चियन और सिख में ऐसा नहीं होता है, राइट। सो इफ यू लुक कि वी वांट टू आस्क समथिंग, हम कोई मन्नत मांगना चाहते हैं और हमें वो पेड़ नहीं मिल रहा है जहाँ हम धागा बांध सके, व्हाट वी विल फील, मतलब कहेगा नहीं यार ये तो पूजा करने की सही जगह नहीं है। नो, देयर इज अ वे। सेकंड थिंग इज दैट इन हिंदू रिलीजियस प्लेसेस देयर इज अ थिंग जिसको हम प्रसाद बोलते हैं। तो जो प्रसाद की व्यवस्था होती है बिल्कुल वहीं पे होती है जहाँ भगवान की मूर्ति होती है। लेकिन जो सिखिज्म के जो प्लेसेस हैं, वर्शिप प्लेसेस हैं, गुरुद्वारे हैं, वहाँ प्रे करने का स्थान अलग है, और जहाँ से हमें प्रसाद मिलता है, जिसको कड़ा प्रसाद मिलते हैं, वो बिल्कुल एक अलग जगह है। इससे क्या होता है, वहाँ पे प्योरिटी रहती है, क्लीननेस रहती है, सफाई रहती है, बिल्कुल सफाई रहती है। सो इफ ए ट्रेडिशनल हिंदू पर्सन विल फील कि प्रसाद हमें वहां से नहीं मिला है जहां से मूर्ति थी, सो ही और शी फील दैट प्रसाद हैव लेस ब्लेसिंग्स, राइट। सो दीज आर नॉन वर्बल एक्सप्रेशंस। यही प्रॉब्लम है नॉन वर्बल की, कि दे डोंट कन्वे द सेम मैसेज। इफ आई टॉक अबाउट कलर, I have seen, I have felt that when Hindu people go for any religious ritual, अगर हिंदू लोग हवन कर रहे हैं, पंडित will say nobody will wear a black attire,
राइट? कोई भी काले रंग का कपड़ा नहीं पहनेगा, मेल और फीमेल. बट इफ आई टॉक अबाउट ए पर्सन ऑफ एनी अदर रिलीजन, दे डोंट हैव प्रॉब्लम विद दैट. एक सिख काले कपड़े पहन के मत्था टेक सकता है, एक मुस्लिम काले कपड़े पहन के पूजा कर सकता है, एक क्रिश्चियन काले रंग का गाउन या शर्ट पहन के वो जा सकता है. नॉट ओनली दैट, इफ यू टॉक अबाउट शूज, आई हैव गॉन टू मैनी चर्चेज, और चर्च में ऐसा कोई रूल नहीं है कि आपको शूज उतारने पड़े, ऐसा कोई रूल नहीं है कि आप नहा के ही चर्च में जाओ, right? But if you go to other places like Sikhism, even if Muslim places, even if Hindu places, there is a ritual कि हमें जूते पहन के नहीं जाना है. रादर सिखिज्म में तो एक पर्टिकुलर प्लेस होता है जहाँ जूते रखे जाते हैं, राइट? सो इफ ए क्रिश्चियन गो टू ए प्लेस, ही और शी माइट फील, यार ये अजीब बात है, यहाँ शूज भी उतारने पड़ते हैं, राइट? सो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की ये इश्यू है कि दे आर नॉट इक्वल टू ऑल. इसलिए जब आपको फर्स्ट और सेंटेंस एक्सरसाइज आपने की, सॉरी क्वेश्चन, लेफ्ट हैंड ओवर राइट विद पाम्स, राइट हैंड ओवर लेफ्ट, ये वी हैव नो नेवर सीन दैट. और मैंने कहा कि इससे भी कुछ हो सकता है क्या कि लेफ्ट राइट के ऊपर हो या राइट लेफ्ट के ऊपर हो, बट इट हैपन्स बिकॉज दीज आर कोड्स. जब कोई चीज ओरली ना बताई जा सके, जो चीज लिख के कन्वे ना की जा सके, तो उसको हम कोड कह सकते हैं. ऑफ कोर्स कंप्यूटर में कोडिंग लिख के ही होती है, बट कोड मींस ए पर्टिकुलर सिंबल फॉर समथिंग. हम कहते हैं ना इस चीज का कोड ये है. कोडिंग, डी कोडिंग. कोडिंग मीन्स टू कॉम्प्लिकेट समथिंग, किस चीज को मुश्किल करते हैं उसको बोलते हैं कोडिंग. डी कोडिंग उसको सुलझा लेना, पहले को सुलझा लेना, right? So non-verbal communication is also about coding and decoding, right? When a person is sitting, कोई आदमी आराम से बैठा है, and he is a knowledgeable person, वो विद्वान आदमी है, लर्निड आदमी है, और वो बिल्कुल चुपचाप बैठा है और दो लोग बोल रहे हैं, and he is listening to. It means he doesn't want to speak because first he wants to check what we are speaking. Second, he wants to show that whatever we are speaking, we are wrong, right? If someone is listening to us and he or she is nodding his or her head, it means he or she is showing uh, positiveness, acceptance. बट कोई हमें सुन रहा है और बिल्कुल भी सिर नहीं हिला रहा है, तो वो हमें कंफ्यूज करना चाहते हैं, right? So these are some non-verbal expressions. Going ahead, can we complete that? It's a matter of clauses, principal clause and subordinate clause. यूज एनी सेंटेंस फ्रॉम योर ओन. कोई भी अपने आप से सेंटेंस यूज करो. एग्जांपल देता हूं मैं. इफ वी वेंट टू बेड नाउ, अगर हम अभी सोने के लिए गए, आई वुड वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग. So, yes, sir. हाँ, अगर हम सोने के गए तो हम जल्दी उठ सकते हैं, मैं जल्दी उठ सकता हूँ. अगर सेकंड की बात करें, इफ वी डिडंट एक्सेप्ट देयर इनविटेशन, अगर हमने उनका इनविटेशन एक्सेप्ट नहीं किया तो क्या हो सकता है? दे मे फील बैड, B. राइट? दे मे, Yes, sir. हाँ, दे मे गेट डिसअपॉइंटेड. यस, ट्राई फॉर थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ. So in third one, it will be like, if I was bitten by a snake, maybe I will be die. I will be die. Or can we say I would like to go to doctor, or I would like to see a doctor at once. Yeah, we can say. है ना? हाँ, we must be assertive ना. इसलिए that's why people say कि लोग है ना सांप के काटने से नहीं डरते, उसके काटने का जो डर होता है उससे डरते मरते हैं. आई हैव हर्ड दैट कि जो एक स्कॉर्पियन होता है वो बहुत तेज काटता है, और इतना तेज काटता है कि स्कॉर्पियन के काटने से बहुत पेन होता है, बहुत बहुत पेन होता है, और इंसान मरता नहीं है बट रोता बहुत ज़्यादा, इतना पेन होता है. एंड इट आल्सो है पॉइजन.
राइट। बट मन में रहता है कि बिच्छू ने काटा है, दर्द होगा लेकिन मरेंगे नहीं, राइट। लेकिन जब सांप काटता है, आई एम लकी अभी तक ऐसा नहीं हुआ है, बट जब सांप काटता है तो कहते हैं काटने के बाद पता चलता है और इतना पेन नहीं होता है, क्योंकि सांप का काटना बिल्कुल ऐसा होता है जैसे पीपल टेल, डॉक्टर टेल कि जैसे इंजेक्शन लगाना, कि जब तक इंजेक्शन की निडल अंदर है, स्किन में है तो पेन है, निकालते ही पेन नहीं है, लेकिन उसके बाद जब जो हमारी मेडिसिन अंदर जाती है उससे पेन होता है। बट स्नेक का जो पॉइजन होता है, आई हैव रेड कि वो इतना व्हाट कैन कॉल इट सोलेबल होता है कि उससे इतना पेन नहीं होता है दवाई की तरह, बट उसके बाद जो वो इम्पैक्ट करता है उससे इंसान मरता है और एक डर होता है कि हमने क्या कर लिया। जैसे अभी आपने बोला, मैं भी ऐसे ही फील करूंगा, राइट। अगर किसी दूसरे जानवर ने काट लिया है तो वी कैन वेट, वी कैन सी, बट सांप ने काट लिया तो कंफर्म है कि द पॉइजन विल एंटर इनटू आवर ब्लड एंड इट विल अफेक्ट आवर हार्ट, इसलिए हम ऐसा यूज करते हैं कि मर जाएंगे। सो आई वुड टू सी, और आई वुड लाइक टू सी ए डॉक्टर एट वंस। थर्ड, what would you do if? So what would you do if I would be I would unable to be there? Okay, what would you do if you feel hungry? What would you Yes, do sir. if your scooty is not in order? What would you do if the tire of your car is flat? So there can be any clause, right? What would happen if similarly, right? What would happen if you won that? What would happen if you lose that, right? So when we have so many options, we must not get confused. Let's go, let's move ahead. Yes, this Sir, is, yes. sorry, sir. Sir, assignment में भी कुछ ऐसे ही subordinate clauses हैं. Sorry, Sir, assignment में भी subordinate clauses से related questions हैं. the assignment you got. Yes, sir. Okay, I have not seen the assignment. I will see the assignment when you submit that. When you will submit that, then it would come to me or any other counselor, right? So Yes. when we talk about a subordinate and principal clause, why these are important part of grammar? Because when it comes to speaking English, spoken English, then we have to use them. फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि इफ यू विजिट दिल्ली अगेन मस्ट मीट मी। इफ आई से इफ यू विजिट दिल्ली अगेन, अगर तुम दोबारा दिल्ली आते हो, मस्ट मीट मी, मैंने से मस्ट मीट मी, मुझे जरूर मिलो। सो मुझे जरूर मिलो, इट्स एन ऑर्डर, राइट। मस्ट मीट मी, ये एक ऑर्डर है, हम कहते हैं कि मुझे जरूर मिलो आप। बट व्हेन यू से इफ यू विजिट दिल्ली अगेन मस्ट मीट मी, इट्स अ रिक्वेस्ट, राइट। अगर हम किसी को बोलते हैं कि मस्ट मीट मी, मस्ट कम टू माई होम, इट्स एन ऑर्डर कि मेरे घर जरूर आना, मतलब मैं आपको बुला रहा हूँ। बट इफ से इफ यू कम टू दिल्ली मीन्स आप अगर दोबारा आओगे तो मुझे आपसे मिलके खुशी होगी, आपको मेरे घर जरूर आना है। सो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल क्लोज एंड सबऑर्डिनेट क्लोज, और से यूज ऑफ क्लोज इन ए सेंटेंस एक्चुअली, इसलिए वो ज्यादा करवाए जाते हैं, इसलिए क्लोज के एक्सरसाइज ज्यादा आते हैं। अब जैसे you can see on your screen, it's about form of verbs, or we can say tense. So try to answer all these questions, everybody who is present in the class, if they are really live, Piyush, Pinky, Monica, Sanskriti, right, everybody, because in your final exam question will come like this. Sir, in first one, refused will come because the sentence is talking about the past tense. Yes, very good. Yes, perfect. I am sure she will lend you money, but I would be very surprised if she refused.
अगर उसने मना कर दिया तो मुझे बड़ी हैरानी हुई, क्योंकि मुझे बहुत उम्मीद है कि वो आपको पैसे उधार देगी। सेकंड वन, So walked walked, yes. Third, will understand. mm, I'm sure Ibrahim understand if you explained the situation to him. Yes, this is sentence of past because explained has been used. That's Sir that's understood. understood. No. Can you see the word if? And Sir if in, was understood. no, if there is if in any sentence, it means we are talking about a possibility, Can. right? Uh, I'm sure everyone can understand. You are right. Can come, but explained has been used. So a form of a word similar to Could. can, could. Okay, yes, could, can be, but can we go for a better answer? अब सिंपल में सोचो कि अगर आप मुझे ऐसा समझाते तो ऐसा हो सकता था, राइट? अगर हम ऐसा करते तो ऐसा हो सकता था। आई एम श्योर इब्राहिम वुड अंडरस्टैंड, राइट, इफ यू एक्सप्लेन द सिचुएशन टू हिम, Yes, राइट? sir. राइट, हाँ। गो फॉर द फोर्थ वन। दिस इज व्हाट वी आर लर्निंग, यही हम सीख रहे हैं। फोर्थ वन, Sir, in this maybe will come like she will very upset if I lost it. again if is there, She would be. she would be, very good, yes. Who answered? Sir Kisra. Kisra. Okay. She would be very upset if I lost it. Very good. Fifth one. Sir, would you mind if I use? Sorry? Sir, would you mind? Yes, very good. Would you mind? Perfect. Would you mind if I use the phone? Good. And what's your name, dear? Because at the same time, I'm unable to see. So you are Sanskriti? पीयूष, 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 यस Yes. पीयूष, यू आंसर्ड इट वेरी वेल। एक्चुअली हमें क्या सीखना है, हमें देखना है कि व्हेन देयर इज इफ, हाँ, प्लीज प्लीज म्यूट एवरीवन प्लीज। व्हाई दिस पर्टिकुलर एक्सरसाइज इज यूनिक, ये खास क्यों एक्सरसाइज? इन एवरी सेंटेंस इफ इज यूज्ड, हर सेंटेंस में इफ यूज किया गया है, एंड एवरी सेंटेंस इज ऑफ पास्ट, सभी सेंटेंस पास्ट के हैं। सो ऑल आर सेंटेंस फ्रॉम पास्ट एंड ऑल आर कंडीशनल सेंटेंस, एंड इन आवर डे टू डे कम्युनिकेशन हम ऐसे सेंटेंस यूज करते हैं। हिंदी में भी यूज करते हैं, अगर ऐसा हो गया तो अगर तुम ऐसा करते तो, काश ऐसा हो सकता, राइट? In the same way we use the same sentence in English. So this exercise is included in our syllabus in order to tell us what we should speak in this kind of situation. So you have answered very well, dear, that would you mind if I use the phone, not use। फिर हम क्या कहते हैं? Will you mind if I use the phone? But it is past, I use, then would will come. Sixth one.
Yes, Sir, I will say yes, this sentence is not from past. I was saying that all are from yes, past. sir. No, this is not. This is not from the past. If I finishes his work on time, I will take him out of lunch. Right. Seventh one, the litmus paper turns red if we, We will no, be tipped. if we dip, Yes, sir. right? If we dip it in acid, I'll punish him if he always, yes, what will come? Anybody? Comes late. Comes late. Yes. After always, we use present tense in general situations. Ninth one, you will you will fall sick. तुम बीमार पड़ जाओगे, तुम गंदा पानी पीते हो तो, राइट. टेंथ वन, द प्राइस इज डैश इफ इट डजंट रन वेल. So the prices will be द प्राइसेस विल गो अप. द So प्राइसेस, will go up. हाँ, प्राइसेस विल गो अप. yes, प्राइस, हाँ, प्राइस बढ़ जाएंगे अगर इस बार भी बारिश नहीं होती है, बिकॉज द क्रॉप्स डिपेंड्स अपॉन रेन. Right? If rain will be lessen, the crop will be lessen, and then when there is shortage of something, the prices goes on. It's the common rule of demand and supply. Yes, this is one more exercise. Okay, I answer the first one. Shall we leave at 10 a.m.? ये एक कॉमन बात बताई गई है कि क्या हम 10 बजे जा सकते हैं. नो. If we leave at 10:30 a.m., we will arrive too early. राइट. हम अगर 10:30 जा सकते हैं कि नहीं, अगर हम इस टाइम गए तो हम बहुत लेट हो जाएंगे, मीन्स हमें थोड़ा जल्दी निकलना पड़ेगा. सो इन द सिमिलर सिचुएशन, इन द सेम कॉन्टेक्स्ट, द क्वेश्चन फर्स्ट इज लीन गोइंग टू राइट द एग्जामिनेशन? इज लीन गोइंग टू राइट द एग्जामिनेशन? कैन एनीबडी ट्राई टू आंसर? हमें फेल को यूज करना है. ओके, आई आंसर. क्या वो एग्जाम लिखने जा रही है? नहीं. If she didn't write the exam, she will fail. Right? If she didn't write the exam, अगर वो एग्जाम नहीं लिखती है, she will fail, वो फेल हो जाए. Right? Second one, let's be honest with them. हमें उनके साथ ईमानदार रहना चाहिए. नहीं. so if they don't believe us, Sorry. so if they don't believe us, If they don't believe us, no. हम लिखेंगे, uh, if we if we will be honest with them, they will not believe us. okay, sir. Right? हाँ. It is something different. ये थोड़ी अलग एक्सरसाइज है. Let's go for the third one. Why don't we visit Birmingham? हमें बर्मिंगम क्यों नहीं जाना चाहिए? क्यों? क्योंकि वो बहुत महंगा है, नहीं जा सकते, नहीं जाना चाहिए हमें. So how we will use it in a sentence? So we don't visit uh, Birmingham because, sorry, if Because it would cost too much, or it will be very costly. yes, sir. Right? It will cost too much.
ये भी बहुत महंगा पड़ेगा. It will cost too much. What about the fourth one? If Manju going to apply for the job, So it will be like if she did not get the job, she will be upset. yes, good. If is Manju going to apply for the job? No. हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं. No. If she will not apply for the job, she will not get the job. Right? अगर वो अप्लाई नहीं करेगी तो जॉब कैसे मिलेगी? If she doesn't apply for the job, she will not get the job. Right? Then she may be disappointed. Right? Let's go for the last one. Why don't we invite Jay home? हम जे को घर पे क्यों नहीं बुलाते हैं? नो. हैव टू इनवाइट फ्रेंड्स टू. अगर हम ऐसा करते हैं तो उसके दोस्तों को भी बुलाना पड़ेगा. सो हाउ विल स्पीक इट इन इंग्लिश? So we don't invite their home because if we invite, we have to We have to invite invite their friends too. his Yeah, friends his too. friends too. His friends too. Yes, good. Very good. So let's move ahead and go to the next section, that is portfolio making. Right? uh, I think anybody of you might have heard about portfolio. This is actually the latest trend, that apart from writing for the resume, जिसकी हम next बात करने वाले हैं अभी, after discussing that portfolio, अभी एक ट्रेंड है मार्केटिंग जॉब्स के लिए, बैंकिंग जॉब्स के लिए, और सिमिलर जैसे टूरिज्म जॉब्स के लिए पोर्टफोलियो एक ट्रेंड चल पड़ा है. अपार्ट फ्रॉम मेकिंग सीवी, वी गो फॉर पोर्टफोलियो. Right? So we will discuss what portfolio is, and why portfolio is important, how it is different from resume, and why it is needed in a job. This is what we are going to discuss. But before that, can you see the picture? आप picture देख पा रहे हो? Yes, students, in the slide only at the right side, can you see the picture? Yes, sir. Okay, Yes, sir. what this picture shows? The picture shows teamwork. Teamwork. Okay. Anyone else? See, it's up to our mindset, it's up to our knowledge, it's up to our experience, I can say, what we want to convey through that picture. This picture tells three to four things at first sight. It may have some other meanings also, but at first sight, this picture is about an adventurous sport, that is rafting, river rafting, right? So this picture shows that somebody have interest in river rafting. This picture can show someone's passion or interest or hobby. First thing. Second, as you have said, this picture shows a teamwork, right? And similarly, at the same time, this picture can show what? Sir, it shows adventure also. Adventure, I have said already, adventurous sports, teamwork. What is the third thing that picture conveys? Can anybody tell me? Dedication. Okay, dedication is a part of teamwork. Ambition also, maybe it will. Ambition. Okay, the 2 points that we have discussed later on, there were so many pictures in your syllabus. Why I have chosen this one only? There are reasons behind that. Let me tell you. Uh, this picture, first of all, tells about a sport,
about enjoyment, about positivity, right, about enjoying vacations. सबसे पहले पिक्चर में शो करती है एक 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 थ्रिलिंग जो एक्सपीरियंस है उसको शो करती है। इसको देख के हमें बड़ा अच्छा फील होता है। सिमिलरली इफ आई शो ए पिक्चर, मैं आपको पिक्चर दिखाऊं जिसमें स्नो स्कीइंग कर रहे हैं। एनीबडी अमंग यू हैव डन स्नो स्कीइंग? आप किसी ने कभी की है स्नो स्कीइंग की है किसी ने कभी? नो, राइट, ओके। एनीबडी हैव डन दिस पर्टिकुलर एक्टिविटी? किसी ने रिवर राफ्टिंग करके देखा कभी? नो 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 इश्यू, इसमें कोई बात नहीं है। हम कभी भी कर सकते हैं। बाय चांस आई हैव डन द बोथ, मैंने दोनों काम करके देखे हैं, स्नो स्कीइंग भी और रिवर राफ्टिंग भी। एंड इफ आई टॉक अबाउट पर्सनली, आई फाउंड रिवर राफ्टिंग more adventurous and more enjoyable than snow skiing. And I want to tell you that when we go for snow skiing, जब हम स्नो स्कीइंग करते हैं उसमें लाइफ का रिस्क बहुत ज़्यादा नहीं होता है। वाई? हम उसमें एक स्लोप पे होते हैं, एक स्लोप से हम खुद को पुश करते हैं एंड वी हैव टू स्ट्रिक्स इन आवर हैंड, और हम फिसलते जाते हैं और जहाँ चाहे हम रुक सकते हैं। एंड इफ वी आर अनेबल टू कंट्रोल आवर सेल्स देन वी आर फॉलन डाउन, हम बर्फ पे गिर जाते हैं और एंड वी गेट वेट, हमारे कपड़े गीले हो जाते हैं, दैट्स ऑल, राइट। बट अगर हम स्नो पे ना गिर के एक किसी खाई में गिर जाते हैं तो हमारी जान जा सकती है और चोट भी लग सकती है। बट स्नो स्कीइंग वहीं पे कराई जाती है जहां 99% आइस हो, बर्फ हो, स्नो हो, right? So I have seen that, or I didn't enjoy it, but there was not so much risk. But when I was doing this river rafting, I didn't know how to swim, मुझे तैरना नहीं आता है, but I enjoyed that, मैंने इसमें enjoy किया। इसका रीजन क्या है? हाउ मेनी ऑफ यू आर विद मी? बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि हाउ इंटरव्यूअर जज द पीपल। लोग इंटरव्यू जो इंटरव्यूअर है वो लोगों को जज कैसे करते हैं कैंडिडेट को। सी, व्हेन आई एम सेइंग स्नो स्कीइंग, जब मैं स्नो स्कीइंग कर रहा हूँ तो मैं अकेला हूँ। आई एम माई सेल्फ रिस्पॉन्सिबल फॉर माई लाइफ, फॉर माई एडवेंचर, फॉर माई इंजॉयमेंट, एंड आई कैन स्टॉप माई सेल्फ, मैं खुद को कहीं भी रोक सकता हूँ, एंड आई कैन कम बैक, आई कैन स्टॉप स्नो स्कीइंग। डिड यू गेट माई पॉइंट? सो my life, my enjoyment, my everything depends upon me, Everything right? is depend on me. Right? But when we talk about river rafting, the life of all depends upon all. आप पिक्चर में देख सकते हो, if any one of them, कोई भी इनमें से अगर एक जो इनके हाथ में आप देख रहे हो, इनसे ज़्यादा कुछ होता नहीं है, ये जस्ट एंजॉयमेंट करने के लिए होते हैं, ये जस्ट फील करने के लिए होते हैं। बिकॉज जहाँ पे रिवर राफ्टिंग की जाती है वो इस तरह का स्लोप होता है जैसे हम बर्फ़ में ऊपर से नीचे आते हैं। रिवर राफ्टिंग में भी हम जो पानी का स्लो है, वो जो बहुत तेज़ पानी का स्लो होता है वहीं हमें छोड़ा जाता है, राइट। तो इसमें इसका कुछ ज़्यादा कुछ होता नहीं है। जैसे एक नाव हम चलाते हैं ना, ठहरे पानी में जब नाव चलाते हैं तो हमें चप्पू चलाना ही पड़ेगा, नहीं तो नाव रुक जाएगी। एंड इफ एवरीबडी विल ट्राई तो नाव और स्पीड से चलेगी, नहीं तो एक आदमी पे जोर पड़ेगा। दैट इज डिफरेंट केस। बट इफ आई टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर स्पोर्ट, तो इसमें इसका ज़्यादा कुछ होता नहीं है, राइट। बट इशू इज दैट अगर कोई भी थोड़ा सा भी लापरवाह होता है तो बोट पलट सकती है। बिकॉज एक बोट में जनरली 4 से 6 लोग होते हैं, 4 से 6, मोर देन 6 आर नॉट अलाउड एट ऑल, अदरवाइज 4 या 5 लोग ही अलाउड होते हैं। और जो आप सबसे पीछे पिक्चर में देख रहे हो, इफ यू कैन सी ऑल द 4 पीपल, जो बाकी 4 लोग हैं, दे आर वेयरिंग ए येलो कलर हेलमेट। लेकिन जो इनका गाइड है, जो इनका ट्रेनर है, जो भी इनका वट एवर वी कॉल इट, यू कैन सी उसमें एक
पिंक कलर का हेलमेट पहना हुआ है, कैन यू सी दैट? यस सर। वो, Sir, हाँ, वो कौन है? वो पीछे रहता है, और वो इनका मास्टर हो सकता है, वो इनका सुपरवाइजर हो सकता है, वो इनका गाइड हो सकता है, हमारा सर डीएसएल। लीडर। नो, नॉट लीडर। लीडर ओके नहीं सर। है, हाँ लीडर। हाँ, लीडर, लीडर कौन होता है? जो हम में से एक होता है, वो लीडर होता है, राइट? व्हेन समवन इज अमंग अस लाइक अस, दैट इज अ लीडर। वो लीडर नहीं है, वो किस लिए छोड़ा गया है? एक्चुअली वो कोई डूब जाए तो उसको बचाने के लिए, राइट? नाव पलटती है, उस सिचुएशन में क्या करना है, कोई रिस्क हो जाए तो किसको इन्फॉर्म करेगा, और बाकी लोग उसकी नाव को खराब ना कर दे। वो तो वो मल्टीपर्पज काम कर रहा होता है, और उसका ये डेली का काम सर, होता है। यस। सर ये एक्सपर्ट हो सकता है। हाँ, एक्सपर्ट, दिस व्हाट आई एम सेइंग, मैं वही तो कह रहा हूँ ना, दिस व्हाट आई एम सेइंग। सी, एक पिक्चर से हमें कितनी सारी चीजें पता चल गई है। इट टेल्स अबाउट हॉबी, इट्स टेल अबाउट एडवेंचर, इट्स टेल्स अबाउट टीम वर्क, एंड इट आल्सो टेल्स अबाउट रिस्क ऑफ लाइफ। एक नॉर्मल आदमी इस पिक्चर को देख के हो सकता है ये करना ही पसंद ना करे, राइट? आई गिव अनदर एग्जांपल, बिकॉज ये पोर्टफोलियो की हम बात कर रहे हैं। आप सब ने झूला झूला होगा, और कुछ झूले ऐसे होते हैं कि वो करीब 90 की स्पीड में, 60 की स्पीड में ऊपर से एकदम नीचे आते हैं, बहुत स्पीड के साथ, राइट? सम देयर आर सम पीपल हु एंजॉय अ लॉट, उनको उसमें इतना मजा आता है, एंड सम पीपल आर वेरी स्केर्ड, दे कैन हैव ए हार्ट अटैक, उनको इतना डर भी लग सकता है, राइट? बट कुछ सम पीपल विल से, अगर आपको इतना डर लगता था तो झूले में बैठे क्यों? आपको रिवर राफ्टिंग में डर लगता था, आपने ऐसा किया क्यों? वाई पीपल डू दैट? बिकॉज दे फील दैट देयर आर सम अदर पीपल हु आर डूइंग सो, एंड इफ दे आर डूइंग सो वी कैन आल्सो डू सो, राइट? So it is not teamwork, it's about following others. सो टीम वर्क में दूसरों को फॉलो करने में बिल्कुल बिल्कुल थोड़ा सा डिफरेंस होता है, बिल्कुल थोड़ा सा। सो दिस पिक्चर शोज दैट, एंड व्हाई आई चोजन दिस पिक्चर, बिकॉज व्हाट इज द डिफरेंस इन द इंटरप्रेटिंग दैट पिक्चर? इस पिक्चर को समझने में जो डिफरेंस है, आप में, मुझ में, एक दूसरे स्टूडेंट में, किसी में भी, वही डिफरेंस है रिज्यूमे और पोर्टफोलियो को पढ़ने, राइट? So during portfolio making, we must have all these points that is before you. What? Creativity, dedication, communication skills, spirit of completion, teamwork, ambition, and spirit of adventure. Right? When we discuss about our hobbies, our personal interest during our interview, it doesn't mean that कि हमें यही बताना जरूरी है कि I like traveling, or I like to read books. No, right? There can be other hobbies also, but if our hobby, if our personal interest show that that can be helpful in our work, would be a perfect example. If आप में से कोई कहता है कि सर माई पर्सनल इंटरेस्ट और माई हॉबीज रिवर राफ्टिंग, इट शोज थ्री थिंग्स, ये तीन चीजें एक साथ दिखा रही है क्या? आपको ट्रेवलिंग करना पसंद है, दूसरा आपको एडवेंचरस स्पोर्ट्स पसंद है, मतलब आप जिंदा दिल आदमी हो, दो, तीसरा आप लाइफ में रिस्क लेना पसंद करते हो, राइट? डिड यू गेट माई पॉइंट? यस सर। अगर आप में से कोई सर कहे कि सर आई वुड लाइक टू लिसन टू म्यूजिक, या मुझे फिल्में देखना पसंद है, तो व्हाट दैट विल शो, वो क्या शो करेगा, बताइए मुझे, लेट मी नो। सर हमारे इंटरेस्ट। ऑफ कोर्स इट इज एन इंटरेस्ट, बट व्हाट इट शोज, ये क्या शो करता है?
ओके, लेट मी टेल यू, व्हेन आई से आई लाइक टू वॉच फिल्म्स, मुझे फिल्में देखना पसंद है, ये शो करता है कि आई एम ए ड्रीमफुल पर्सन, मुझे सपने देखना पसंद है। ये शो करता है कि आई वांट पीस, मैं एक शांति प्रिय आदमी हूँ और मुझे घर पे रहना पसंद है। ये शो करता है कि आई बिलीव दैट इफ समथिंग इज नॉट हैपनिंग इन रियल, वी कैन हैव ड्रीम ऑफ दैट, क्योंकि सिनेमा यही सिखाता है, right? And according to this thing only we choose our genre, उसी के अकॉर्डिंग हमें जॉनर पसंद आते हैं। some people like horror films, some people like comedy films, some people like romantic films, according to our genre we categorize our films, और यही वो चीज़ शो करता है। So, if we want to organize our portfolio, we must look at these things. हमें ये कुछ चीज़ें जिनको ध्यान में रखना है, क्या is a portfolio just another name for a resume? क्या ये resume सिर्फ एक दूसरा नाम है? क्या ये सिर्फ एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन है? वो सब कुछ जो हम रिज्यूमे में लिखना चाहते हैं, क्या ये सब उसका एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन है? राइट? हम जो अब तक कर चुके हैं, क्या ये सिर्फ उसके बारे में है? राइट? और अब तक जो हमने किया, क्या उसका एक पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन है पोर्टफोलियो? तो ये हमें एक बार ध्यान में रखना होगा कि क्या रिज्यूम जो पोर्टफोलियो है हमारा, ये रिज्यूमे से कैसे अलग है, राइट? सर सॉरी, सर पोर्टफोलियो में मतलब वो एक सीवी का पार्ट होता है। yes, it's a part of CV, and in it we do not mention our qualifications, courses, trainings. These are mentioned in resume only, but portfolio is different description of our capacities, our skills, and our leadership skills, and other things that we are not able to mention in our resume, वो सब portfolio में आता है। इफ यस अगर सर। अगर हम दिखाना चाहते हैं कि मुझे स्नो स्कीइंग पसंद है, तो इन प्लेस ऑफ राइटिंग स्नो स्कीइंग इन रिज्यूमे, हम पोर्टफोलियो में एक वो फोटो इंक्लूड कर सकते हैं व्हेन वी वर डूइंग स्नो स्कीइंग, राइट? इट विल, हाँ, वो ये भी साथ में शो करता है कि मुझे सिर्फ पसंद ही नहीं है, मैंने किया हुआ भी है। जैसे इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, अगर मैं अपनी बात करूं, तो मुझे एज ए हॉबी का मैं बात करूं, तो आई लाइक टू फ्लाई हेलीकॉप्टर, मुझे हेलीकॉप्टर उड़ाना बहुत पसंद है, लेकिन मैंने ऐसा कभी किया नहीं है, मैं ऐसा कर नहीं सकता। बट इफ आई शो ए पिक्चर व्हेन आई एम इन हेलीकॉप्टर, so this shows that I have experienced this thing, right? This is difference between resume and portfolio. जो आपका सिलेबस है, जो आपकी कोर्स बुक है, उसमें चीज़ें बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन की गई है। आई हैव टेकन दीज पॉइंट फ्रॉम दैट ओनली, दीज आर वेरी सेल्फ एक्सप्लेनिंग पॉइंट्स, राइट? सी नाउ how a portfolio is different from a resume. You can read. A portfolio is not a resume. The first person document is the portfolio, in the portfolio is resume, right? जब हम फर्स्ट पर्सन की बात करते हैं, द फर्स्ट पर्सनल डॉक्यूमेंट, जब हम सब कुछ जो अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन देते हैं, राइट, दैट इज पोर्टफोलियो। सो पोर्टफोलियो इज पार्ट ऑफ रिज्यूमे, right? Resume is not part of portfolio, but portfolio is part of resume. It's up to us what we want to mention in under the word resume, and what we want to mention under the word portfolio. Portfolio contains tangible evidence of your skills and abilities, means pictorial evidence, आप उनको शो कर सकते हो। इट में अगर हम कहें कि आई लाइक सोशल सर्विस, मुझे सोशल सर्विस बहुत पसंद है, एंड वी आर शोइंग ए पिक्चर, जब हम सोशल सर्विस कर रहे हैं, किसी गांव में गए हैं, सफाई कर रहे हैं, एंड वी हैव ए पिक्चर ऑफ दैट, राइट? इट में कंटेन कलरफुल ग्राफिक्स रिलेवेंट टू स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर द पोजिशन आउट, राइट? हम जो पोजिशन अप्लाई कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हमें क्या आता है। जब हम पुरानी कंपनी में थे तो सेल पहले कितनी थी, फिर सेल कितनी बढ़ गई हमारे जाने के बाद, दैट कैन बी शोन थ्रू
A graph. A portfolio is not seen out like a resume. It is usually taken along at the time of interview. राइट, तो इसको हम हो सकता है एक बिल्कुल रिज्यूमे के साथ ना भेजें, बट जैसे ही कोई हमें कोई कहे टेल अस अबाउट योर सेल्फ, वी कैन पुट अवर पोर्टफोलियो, हम अपना पोर्टफोलियो रखेंगे सर, ऑफ कोर्स आई विल टेल अबाउट माई सेल्फ, बट देर इज अ लॉट रिटन अबाउट मी इन दैट, वो हम आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं. वाई इज पोर्टफोलियो वर्थ द वर्क, इसकी जरूरत क्यों पड़ती है, क्या काम करता है? इट हेल्प्स टू मेक फोकस्ड प्रिपरेशन फॉर इंटरव्यूज, राइट, हाँ, convince others of your skills, abilities and qualities pertaining to the job requirement, right, because it contains graphs and pictures, it's a part of non-verbal communication. Showcase and hence communicate your skills clearly, हम किसी भी स्किल के बारे में एक तो हम बोल के बताएं, वी मेंशन थ्रू ए पॉइंट, और वी कैन प्रोवाइड ए पिक्चर, photograph or certificate of that particular activity or expertise. Demonstrate the results of your work. अपने रिजल्ट शो करने का सबसे अच्छा तरीका है पोर्टफोलियो. वी कैन प्रेजेंट ए ग्राफ. Establish the habit of documenting your accomplishment and results. Right? Create a personal database. हम अपना डेटाबेस भी प्रिपेयर कर सकते हैं. We can prepare our file and that file must contain whenever you complete something, जब भी आप कुछ काम करते हो, कोई अच्छी चीज करते हो, कुछ अचीव करते हो, सो उसके ऊपर आप एक शीट बना सकते हो, पेपर पे पोर्टफोलियो टाइप एक डॉक्यूमेंटेशन कर सकते हो. दैट विल वर्क लाइक ए डॉक्यूमेंट, वो एक डॉक्यूमेंट की तरह काम करेगा. असेस योर ओन प्रोग्रेस इन योर करियर डेवलपमेंट, और हाँ ऑफ कोर्स हम अपने करियर डेवलपमेंट को भी असेस कर सकते हैं. हम एक ग्राफ बनाएंगे जिसमें वी कैन मेंशन आवर सैलरी, right, we can mention when we were working, I was working in that company, my salary was that, and I was happy with these points, but I was unhappy with these points, that's why I changed my job. So जिन चीज़ों के लिए हमने जॉब चेंज की है उनका हम एक अलग ग्राफ बना रहे हैं, एंड वी कैन सी कि जब हम सबसे पहली जॉब में थे और अब जब प्रेजेंट जॉब में हैं, दोनों में कितना डिफरेंस आया है, द थिंग्स वी डोंट लाइक वो कितनी कम हुई है. राइट, तो खुद को असेस करने का एक बहुत अच्छा तरीका है. राइट, हम अपने पोर्टफोलियो कैसे बना सकते हैं, तो इसमें हम ये चीज़ें इंक्लूड कर सकते हैं. दैट दीज आर बिफोर यू. Right, so portfolio is a detailed description of our educational qualifications, experience, or co-curricular activities, personal and professional interest, means everything we would like to mention before our interviewer in order to impress him or her. So anything that we want to include will come under the portfolio. Right, so portfolio is a very impressive and bigger thing. Letter of recommendation, letter of reference, manual handbooks, merit reviews, photographs, presentations, programming examples, means portfolio is a file that includes your documents and description regarding those documents. For example, if I have a mark sheet, मेरे पास एक mark sheet है, that shows, जो शो करती है कि आई टॉप्ड इन माई क्लास और आई टॉप्ड इन माई यूनिवर्सिटी, और उसमें मार्क्स भी लिखे हुए. बट इफ वी विल राइट वन मोर पेज according on the basis of that particular class, that particular qualification, हम उस पर कुछ लिखना चाहते हैं, तो वी नीड एडिशनल पेपर, और जो एडिशनल पेपर हम लगाएंगे दैट विल कम अंडर पोर्टफोलियो. So this is the difference between resume and portfolio. Right? Let us move ahead. Yes, sir. हाँ जी, हाँ जी.
क्विकली ट्राई टू डू दैट एक्सरसाइज, जल्दी से करके देखो एक बार। Sir, carpet. Carpeted. ऑल दीज वर्ड्स दैट आर बिफोर यू, जितने भी वर्ड आपके बॉक्स में दिए गए हैं, ऑल आर नाउन, ये सभी के सभी नाउन है। बट नाउन इज आल्सो यूज्ड एज फॉर्म ऑफ वर्ब्स। नाउन भी हमें फॉर्म ऑफ वर्ब की तरह यूज करना पड़ सकता है, एंड वी कैन यूज दैट। तो ये एक्सरसाइज यही सिखाने के लिए, कैसे, आई वांट माई रूम कारपेटेड, राइट। हाँ, क्विकली, जो बाकी बच के रेस्ट ऑफ ऑल जल्दी बताइए। Sir, we flowed down. सॉरी, Sir, we flew down to Lucknow. No, sir, we Certain voted motor down will to come. Lucknow. We are boarded down. I'm not able to get. There's a lot of background noise, I can say. Please speak clearly. थोड़ा तेज बोलिए. Sir, in second one, the motor will come. We motor down to Lucknow. We motored down. Yes. Okay. Yes. Good. Next one. He piloted the plane in a skillful manner. He piloted. Yes. He piloted the plane in a skillful manner. Yes. Pilot जो plane उड़ाता है, but piloted we can also use. Fourth one. Sir, it will be who will captain the team. Who will be the captain? Who will captain the team? Sir, who will be Sorry. captain? हाँ, नहीं, sorry. Who will captain the team? इसमें captain ही आएगा. Who will captain the team? Yes. Okay, sir. Yes. If we want to use captained, we can say by whom the team was captained. By whom the team was captained. Otherwise, we will say who will captain the team. Right? Fifth one. It will we squeed up for Yes. the Yes. Very good. We queued up for the tickets. Very good. Sir, After his after his father, father, Yes. after Yes. his father's death, he shouldered all the Yes. responsibilities. Yes. He shouldered all the responsibilities. Yes. Good. Let me. butter the toast. butter, Buttered the toast. Yes. Okay. Eighth one. Sir, it will plants bud in spring. Budded, right? Plants budded in the spring, right? Okay. Ninth one. He. Sir, it will he pocketed all the money and Money and left. Yes. Good. And the last one. it will be floored. Flowed. Floored, right? So floored क्या होता है? His last question completely floored me. Floored me क्या होता है? जिससे हम कहें ना, कुछ कोई चीज सुन के गिर गए हम, मतलब परेशान हो गए, राइट? हाँ. sir. Yes. Sir, what type of questions or fill in the blanks are these? Yeah. Yes. Good question. When we say fill in the blanks, and when we use a form of verb according to tense, that is part of tense. But this exercise was planned, or it meant to let you know that we can use noun forms as verb forms also. कई बार हम नाउन फॉर्म को भी एज ए, जैसे एक वर्ड है कंडीशन, राइट? कंडीशन मीन्स स्थिति, राइट? दिस मेड मी कंडीशनिंग दैट, इस चीज ने मुझे ये सोचने को या इस सिचुएशन में जाने को मजबूर कर दिया। जैसे एक वर्ड है पोजीशन। पोजीशन एक नाउन है, एक स्थिति है।
अगर मैं कहूँ आई पोजिटेड माई सेल्फ ऑन द सीट, राइट। सो ये जो वर्ड हैं पायलट, बटर, कारपेट, शोल्डर, ये सब नाउन है, बट सर मतलब it is using as helping verb here. नॉट मेन वर्ब। Okay, sir. हेल्पिंग So वर्ब तो ये हो, linking verb. सर हेल्पिंग वर्ब तो ये हो ना हु विल, राइट। बट Okay, okay, okay. हाँ, बट Got it. यू आर, हाँ बट यू आर राइट, when they are working as main verb, they are also working as helping verb, Yes, sir. right? हाँ, this is what this exercise tells, So I right? thought कि will would be uh, using verb. See, if it comes in your exam, because ये मैंने आपके जो आपकी बुक है, जो आपके नोट्स हैं, मैंने ये वहीं से लिया है, मैं उसी को आजकल ज़्यादा फॉलो करता हूँ। फ्रॉम माई साइड आई एड लेस एक्सरसाइज, मैं वहीं से एक्सरसाइज ज़्यादा करता हूँ जो आपके सिलेबस में है, सो दैट आप पेपर के लिए प्रिपेयर हों। एवरी एक्सरसाइज इज डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस वन। आपने देखा होगा मैं कोई भी एक्सरसाइज रिपीट नहीं करता हूँ, राइट। Yes, sir. वाई Yes, sir. वाई बिकॉज आपको एटलीस्ट एक का आइडिया हो जाना चाहिए। वेल इफ वी मूव अहेड, अगर हम सेकंड को देखें, सी दिस, इसको देखो एक बार। दीज आर फ्रॉम मोडाल्स, ये मोडाल से। Although you should make a portfolio to apply for job, it helps to represent your skills and capabilities better. So these exercises are taken from your notes only, जो आपके notes हैं ये वहीं से लिया गया है, Yes, sir. right? सर मैं समझ गई, मतलब वो जो नाउन है उसे मेन वर्ब की तरह यूज किया जा रहा है। जी जी, ओके right? सर। हाँ सर इन, आई हैव अ क्वेश्चन। हाँ जी बोलिए, यस स्पीक। सर वर्ड इंग्लिश वर्ड, सर ये जो हमारा जो हम अभी पढ़ रहे हैं इसका अभी अपडेट नहीं हुआ है असाइनमेंट इसका अपडेट नहीं वेबसाइट हुआ? पे। क्या अपडेट नहीं हुआ है? सर असाइनमेंट अपडेट नहीं हुआ है, अब असाइनमेंट आया ही नहीं है। ओके, इट मे हैपन, इट विल कम लेटर ऑन, ऐसा हो सकता है। यस सर। Again I tell you, I have just a minute. Yes, your time is different, my time is different, means the date that you are supposed to submit the assignment, after almost everybody submit the assignment, then it is sent to the coordinator to check for that, counselor to check for that, राइट। एंड एज फार एज टीचिंग इज कंसर्न, हमें ये पहले ही कर देना होता है। आई एम डायरेक्टेड दैट विद इन द मंथ ऑफ सितंबर आई मस्ट फिनिश ऑल दीज 4 क्लासेस, राइट, सो दैट यू कैन प्रिपेयर द असाइनमेंट। पहले हम सब ये पढ़ लेंगे और इसके बेस पे जो आपको असाइनमेंट दिया जाएगा, इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू, फिर आप उस असाइनमेंट को अच्छे से बना पाओगे। व्हेन यू विल गेट दिस असाइनमेंट एंड व्हेन यू विल गेट दैट एक्सरसाइज, तो आपको ये पता चलेगा कि यस वी हैव कवर्ड दैट इन द क्लास, तो आप उस चीज़ को कर पाओगे। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन गो फॉर द रिकॉर्डिंग, आप देख सकते हो कि वो चीज़ मैंने कैसे समझाई थी। अगेन आई एम सेइंग, जो आपके सिलेबस में है, नाउ आई एम फॉलोइंग दैट ओनली, मैं वही फॉलो कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू गो टू द दिस वन, सी इसको पढ़ें एक बार। Choose the correct phrase word in italics to complete the each answer. Applicant indicate include the names of two referee. अब ये जो एक्सरसाइज है, सी दिस वन, नो दिस वन, दिस वन, this one is from the portfolio section, right? Second, this is also from the portfolio section, and this one, this is also from the portfolio section, right? यस सर। When you will do all these exercise, this one and this one, when you will study that, जब आप ये सब करोगे, तो what you will find, आपको क्या पता चलेगा, of course
टाइम भी हो गया है, बट गिव मिनट, क्योंकि आज मैंने आपके लिए भी कुछ काम छोड़ा है। एंड लेट मी टेल यू डियर, जस्ट अ मिनट। कैन यू सी द पीडीएफ? एक पीडीएफ देख पा रहे हो आप? यस सर। Right, so this is what we were supposed to cover today, right? This is block 2, right? So सर पीडीएफ विजिबल नहीं है। पीडीएफ विजिबल नहीं है? नो सर। जस्ट a minute. Now यस सर इट इज। it is. So what is written? क्या लिखा हुआ है? इंग्लिश एट वर्कशॉप, English at workplace, सॉरी वर्क प्लेस। right? See, आज हमने ये दो चीजें कवर की हैं। यूजिंग बॉडी लैंग्वेज इफेक्टिवली, सेकंड पोर्टफोलियो मेकिंग, राइट? वाई वी हैव कवर्ड ओनली टू थिंग्स? हमने दो ही चीज़ें क्यों कवर की है? बिकॉज दिस यूनिट 7 एंड यूनिट 8, राइटिंग योर CV, प्रिपेयरिंग टू फेस एन इंटरव्यू। प्रिपेयरिंग टू फेस एन इंटरव्यू, अगर आपको याद हो तो लास्ट क्लास में मैं कवर करा चुका हूँ। किस तरह याद कर सकते हो आप? यस सर यस सर। Right, so I found that it is very similar to that, but what is new here? This is writing your CV. When I discussed about portfolio making, it is easy to write your CV. So you will do what? Everybody of you, आप लोग क्या काम करेंगे? See, ये जो एक्सरसाइज अभी हमने कवर की है, see, आपने ये एक पिक्चर सबसे पहले देखा होगा। वी स्टार्टेड विद दैट, हमने इसी से शुरू किया था। कैन यू रिकॉल? यस सर। हाँ, एंड आफ्टर दैट इफ यू विल रीड दैट, अगर ये आप पढ़ते हो, राइट? सो आफ्टर रीडिंग दैट एंड दिस वन, राइट, एंड आई हैव नॉट कवर्ड दैट, मैंने इसकी आपसे बात नहीं की। क्या? बिसाइड स्पीकिंग, व्हाट आर द अदर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, बिकॉज दीज आर कॉमन थिंग, एंड ये आप खुद से एक बार पढ़ सकते हो। सो इन दिस सेक्शन कुछ चीज़ें ऐसी हैं दैट आई शुड डिस्कस, एंड द थिंग्स दैट यू कैन रीड फ्रॉम योर ओन, आप खुद से भी ऐसा कर सकते हो। ओके, गोइंग अहेड, यस, दिस वाज लेफ्ट हैंड इंटरेस्ट, राइट हैंड डिसएग्रीमेंट, ये आपने देखा। सो व्हेन वी सो दैट ये कहाँ से आया, इफ वी विल रीड दिस, अगर हम इसको बहुत ध्यान से पढ़ते हैं, राइट, तो हमें अपना पता चल जाए। सो व्हेन वी रीड दैट एंड वी विल डू दैट एक्सरसाइज, सो अपने आप हमारी रिवीजन हो जाती है। एक्टिविटी 6 ये भी पढ़ने का है। सो अभी आपका जो सिलेबस है इस पेपर का, इसमें पढ़ने का बहुत ज़्यादा है, जो एक्सप्लेन करने का है दैट आई एक्सप्लेन। अब ये यूनिट 6 अबाउट पोर्टफोलियो मेकिंग, ठीक। सो दीज वर 4 पिक्चर्स, ये एक पिक्चर थी जैसे, right? And this is the question. Take a look at the picture. What qualities of a person do you think each picture highlights? So if I will discuss about every picture, so within 2 hours we will cover only one topic. हम आगे जा ही नहीं पाएंगे, right? See, इससे ये क्या शो कर रही है, ये क्या शो कर रही है, and this one, yes, and I have chosen this one, right? And how we use those pictures, for that हमें क्या करना है, इन पिक्चर्स को देखने के बाद प्री रीडिंग ये हमें पढ़ना है। यस सर। सर आप एक ही एग्जाम्पल से पढ़ाते हैं तो बहुत अच्छे से समझ आता है, इसकी वजह से जब एक्सरसाइजेस करती हूँ तो बहुत हाँ, इजी लगता है। हाँ, बट द प्रॉब्लम इज दैट, द इश्यू इज दैट sometime it takes a lot of time to explain a particular thing, and then we feel the shortage of time, right? Okay, अब जल्दी से हम आगे चलते हैं, and let me tell you,
बिकॉज आई रीड एटलीस्ट ट्वाइस, दीज आर 60 पेजेस, ये जो पीडीएफ है आपका 60 पेजेस का है, तो मुझे कम से कम 2 बार पढ़ना पड़ता है, बिकॉज यू मे आस्क एनीथिंग एंड यू आर सपोज टू आस्क, रादर मैं चाहता हूँ कि आप आगे से जो हमारी 2 क्लास बची हुई है, मैं चाहता हूँ कि आप अगर ये पीडीएफ पहले पढ़ के आए ना, तो इट विल बी मोर इजी फॉर यू, नॉट फॉर मी, मुझे तो पढ़ना ही है, इट विल बी इजी फॉर यू। फॉर एग्जाम्पल दिस 7th वन, ये जो 7th वन है, आई एम डूइंग ए जॉब, मैं आपको एक काम दे रहा हूँ, कल जो हमारी क्लास होगी बाय 10 to 12, आप सब ये काम करके आएंगे क्या, दिस यूनिट 7 आप इसको पढ़ेंगे एक बार, क्योंकि हाफ तो मैंने कवर करा दी है। सो राइटिंग योर सीवी, ये बहुत आसान है, आप सबको सीवी बनाना भी आता है, एंड देयर आर लॉट ऑफ फॉर्मेट्स अवेलेबल ऑन इंटरनेट, नेट पे बहुत सारे फॉर्मेट भी होते हैं। सो आपको ये पढ़ना है, सिविल लेंथ कितनी होनी चाहिए, क्या क्या हमें इंक्लूड करना है। सो व्हेन आई वाज रीडिंग दैट आई फाउंड कि इसमें बहुत ज़्यादा, हाउ डज ए सीवी हेल्प इन जॉब हंटिंग, सो इट्स अ कॉमन क्वेश्चन, राइट, ये इट इज़ नॉट वर्थ डिस्कसिंग अ लॉट, ये बहुत ज़्यादा डिस्कस करने के लायक नहीं है, right? ये आप कर सकते हो। देन व्हेन वी गो फॉर वोकैब, वोकैब भी इसकी बहुत सिंपल है, एडिशनल स्किल्स, इंटरेस्ट, पर्सनल डिटेल, प्रोफाइल, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, रेफरीज, ये सब चीज़ें जो हमने सुनी हुई है और हम अक्सर करते भी है। वेदर वी आर द स्टूडेंट ऑफ 12th क्लास, हम सबको पता है कि हाउ वी विल राइट बायोडाटा, अभी जो पॉइंट दिए गए हैं, एबल टू वर्क वेल इन टीम, राइट, ये सब बहुत कॉमन चीज़ें हैं जो हमें पढ़नी है। सो यू विल रीड दैम एंड you will prepare your resume, and if you feel any problem in next class, before starting the class ask me, I will answer, there is no issue, मैं पहले ही इनका आंसर दूंगा if you have any question, right? और क्योंकि अब क्लास का जो डिफरेंस है वो एक वीक का नहीं है, बिकॉज टुमारो वी विल हैव क्लास, सो आप ये जो भी बच गया है ये पूरा कवर कर सकते हो, बिकॉज इट वाज वेरी सिंपल, लाइक एम्प्लॉयर्स डोंट केयर व्हाट सीवीज लुक लाइक, एम्प्लॉयर्स को फर्क नहीं पड़ता कि सीवी कैसा दिखता है, ट्रू और फॉल्स, इट्स फॉल्स, एम्प्लॉयर्स को फर्क Yes, पड़ता sir. है, फर्क पड़ता है, यस, राइट, दिस इज द डिफरेंस, इसलिए तो हम पोर्टफोलियो बना रहे हैं। सो ये सब जो क्वेश्चन है, राइट, इट इज बेटर टू फोकस ऑन की फैक्ट्स, ट्रू, सच बात है। सो दैट्स व्हाई आई डिडंट डिस्कस इट, इसमें कुछ ज़्यादा मुझे लगा नहीं वर्थ डिस्कसिंग, राइट। देन यस, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, ये टेंस एक्सरसाइज थी, और टेंस एक्सरसाइज हम कई बार कर चुके हैं, सो दैट्स व्हाई आई थॉट वी डोंट नीड दैट। फिर हमें सीवी लिखना कैसे है इसके बारे में बताया गया। अब सी, प्रोफाइल, एजुकेशन, एक्सपीरियंस, राइट, सो देर इज नॉट ए सेट फॉर्मेट, तो अगर मैं आपको पढ़ाता हूँ तो उससे क्या लगेगा कि आई एम टेलिंग ए पर्टिकुलर फॉर्मेट, एंड आंसर्स आर गिवन, आंसर्स भी दिए गए। सो यूनिट 7 जो है इट्स ऑन ऑल अबाउट राइटिंग सीवी, आप इसको पढ़ सकते हो और बिना इसको पढ़े भी आप एक अच्छा सीवी बना सकते हैं, राइट। नाउ कम टू द लास्ट वन, preparing to face an interview. I have covered this very deeply in the last class. Last class में मैं इसके बारे में बहुत डिटेल में बता चुका हूँ, and I found that again it is to the similar one. पहले के बारे में ही है ये, role of communication, right? हाँ, what is SWOT analysis, ये सब उसके बारे में है। So see, द बिग 10 मस्ट डूज फॉर द इंटरव्यू, ऐसी 10 चीजें जो हमें इंटरव्यू से पहले जरूर करनी चाहिए। अराइव अर्ली, राइट, मस्ट हैव आवर अपडेटेड रिज्यूमे विद अस, वियर फॉर्मल क्लॉथ्स, सिट प्रॉपरली, मेंटेन आई कॉन्टैक्ट, राइट। सो ये वो चीजें हैं, सो दैट्स व्हाई आई थॉट आई शुड नॉट रिपीट ऑल द थिंग्स वंस अगेन। 8th यूनिट भी इसके बारे में, रीड दैट, और इसमें रीडिंग का बहुत ज़्यादा है, इसमें मोस्टली रीडिंग के बारे में, अगेन ये वही एक्सरसाइज है, राइट, दीज आर एक्सरसाइज, और यहाँ से हमें वर्ड को चूज करना है, राइट। दिस सी, दिस इज, ये एक रिज्यूमे का फॉर्मेट दिया गया। 7th में ऐसा एक बॉक्स दिया गया था दैट वाज एम्प्टी, और ये इसमें ये बताया गया है कि ऐसे हमें इसको मेंशन करना है, राइट। और ये वही बात, वर्बल क्यूज, sticking to the main point, relevant responses, right? Smiling, clear voice, relaxed manner, early arrival, ये वही चीजें हैं बिल्कुल।
एंड इट्स एन एक्टिविटी, हमें ये सुनना है, फिर इसके हमें आंसर देने हैं, और कुछ फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं, और मोडाल्स, मोडाल्स जो हम आज पहले भी कर चुके हैं. सो एट्थ इज अबाउट दैट, एंड नाउ इट एंड्स, राइट. सो रीड फॉर द सेवंथ वन एंड एट्थ वन. और सेवंथ में ज़्यादा कुछ पढ़ने का नहीं है, इट्स अबाउट प्रिपेयरिंग ए रिज्यूमे. हो सकता है आपके पेपर में क्वेश्चन आ जाए इनसे रिलेटेड, तो दैट्स वाई आपको पढ़ना, हो सकता है पढ़ना पड़े, राइट. सो this was the content of our today's class, right. So go for it, पढ़ना इसको, whatever we have covered today in the fifth and sixth, because जो पढ़ाने का था वो फिफ्थ और सिक्स्थ में था, right. because there was some new things, जैसे पोर्टफोलियो आपने पहली बार सुना होगा ड्यूरिंग रिज्यूमे, और yes, this one, using non mobile during interview, right. So go for that, इनको पढ़ो, and if you feel any problem let me know in the tomorrow's class, otherwise we will start the third unit. हम थर्ड यूनिट कल शुरू करेंगे, Okay, राइट. sir. हाँ. Yes. हाँ, ओके एवरीवन, सी यू टुमारो. See you, sir. Thank you. ओके Thank you, स्टूडेंट्स, sir. थैंक यू. थैंक यू सर.